गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट काइंड इज का असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस लिखकर डाल देंगे। assertive sentence, a sentence that makes a sentence that makes a statement is called an assertive sentence. An assertive sentence. एग्जाम्पल लिखेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा काइंड है, सेकेंड नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। ए सेंटेंस दैट asks a question a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। What is your name? What is your name? थर्ड नंबर पॉइंट है इसका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस दैट expresses an order, a request, or a piece of
or a piece of advice, is called an imperative sentence, called an imperative sentence. एग्जाम्पल लिखेंगे, bring a glass of water, bring a glass of water, bring a glass of water. फोर्थ नंबर पॉइंट है ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस लिखेंगे, a sentence that expresses some curse, blessing, prayer, a sentence that expresses some curse, blessing, prayer, or wish is called an operative sentence. An operative sentence. It's called an operative sentence. एग्जाम्पल लिखेंगे, May God help you. May God help you. May God help you. फिफ्थ नंबर पॉइंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फिफ्थ नंबर पॉइंट है इसका, लिखेंगे, a sentence that expresses some sudden, a sentence that expresses some sudden feeling, some sudden feeling, or some sudden
A sentence that expresses some sudden or some sudden or strong feeling, some sudden or strong feeling, of the mind is called an exclamatory sentence. It's called an exclamatory sentence. Exclamatory sentence. एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, हाउ डार्क द नाइट इज, हाउ डार्क the night is. How dark the night is. How dark the night is. How dark the night is. एक बार और रिपीट कर देते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज का असर्टिव सेंटेंस. A sentence that makes a statement is called an assertive sentence. Example है I am going to school. I am going to school. इसका एग्जाम्पल है. सेकेंड पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सेकेंड पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. एग्जाम्पल है What is your name? थर्ड पॉइंट है imperative sentence. A sentence that expresses an order, a request, or a piece of advice is called an imperative sentence. एग्जाम्पल है Bring a glass of water. Bring a glass of water. फोर्थ नंबर पॉइंट है ऑपरेटिव सेंटेंस. A sentence that expresses some curse, blessing, prayer or wish is called an operative sentence. एग्जाम्पल है May God help you. फिफ्थ नंबर पॉइंट इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. A sentence that expresses some sudden, a sentence that expresses some sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence. Example है How dark the night is. How dark the night is. इसे सभी को अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना है और इसे याद करना है. साफ सुंदर राइटिंग में अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे याद करेंगे सभी. ओके, बाय.